Hey, hello everyone. I hope I am audible and visible. Hmm. I think I'm properly audible and properly visible. Okay, hi Urmi. I think everything seems to be fine, right? Okay, so things looks good, and let's start our discussion जो भी है हमारे उसमें, ठीक है? So there are some good news, there are some bad news. Yesterday I saw a video, है ना, जिसमें there is this particular journalist who straight went to Calcutta University, जिसके बाहर I guess समाजवादी पार्टी के जो स्टूडेंट विंग के वो हैं लोग हैं, they were protesting. Then he started talking to them. Then he started talking to the student and asking कि what kind of messages and reels they are getting. And he was like कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, we got the admission, हमने फीस भर दी है. And there are tons of different things. तो ओवरऑल फैशन में कलकूटिया कल भी न्यूज में था. देन सेकंड थिंग दैट वाज इन न्यूज कि जो नई फाइल्स आई हैं स्टीम के फॉर्म एप्स्टीन फाइल्स में, राइट, दोस फाइल्स आर लाइक लुकिंग मोर कंट्रोवर्शियल. सो एप्स्टीन फाइल के केस में और भी पर्टिकुलर चीजें आई हैं एंड इट्स गेटिंग डार्कर एवरी डे. हाय दक्ष. I mean, they are talking about pandemic preparation. They are talking about 9/11 shadow organization, shadow committee. They are talking about Third World War. They are talking about stock market regulation. So ऐसी बहुत सारी चीजें जो है स्टीम फाइल में वो देखने को मिल रही हैं. एंड यस, लाइक थिंग्स आर गेटिंग डार्कर. मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ये सारी चीजें मेंशन थी. इट वाज फ्रॉम लाइक अ वेरी रेपुटेड न्यूज़ चैनल. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है. आई मीन मीडिया अमेरिका का भी डिवाइड है इस पर्टिकुलर चीज में. देयर आर पीपल हु आर कॉलिंग हिम like Russian agent. There are people who are calling him Israeli agent. I mean, they also discussed ki by 2032 whether the Arabs should exist or not. You know, they're talking about the complete annihilation or complete genocide kind of thing. That's like close to 1 billion people. And मतलब मैं बता दूं ना, चीजें डार्क हो रही हैं तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है. तो दैट इज समथिंग जो कि कल के न्यूज में था. देन टुडे वी आर गोइंग टू सी द फाइनल व्हाट वी कैन से एआई इम्पैक्ट समिट का फाइनल डे है. तो वो आपको देखने को मिलेगा, है ना. कल yesterday the Congress youth wing went to AI Impact Summit and they protested with not so very good manners. So they went to the summit and they started taking off their t-shirt and they started protesting against the American deal, US India trade deal for the farmers, and other particular slogans were raised and several different things. Right to protest, right to dissent is your fundamental right, but I believe you should have chosen the different occasion, or even if you don't want to change the occasion, you should have protested outside the venue. अंदर उसके इस टाइप का पॉलिटिकल माहौल दिखाने से आई थिंक जो लोग सच में एआई इम्पैक्ट समिट में कुछ अच्छा करने वाले थे, देयर वाज several people who actually presented very good models and very good usage applications of AI. तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट आना था, उनके लिए जो पर्टिकुलर पॉजिटिव चीजें होनी थी, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज तो हो सकती है. बिकॉज इफ आई एम एन इन्वेस्टर एंड आई सॉ सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल what we can say scenario, political event, तो definitely I'll feel bad and I'll start thinking whether I should invest or not. तो मुझे ऐसा लगता है कि yes, your right to protest is protected by the Indian Constitution, and that should not be happen in such a manner कि वो locally बहुत ज्यादा क्या करे, परेशान करे या जिसका इन कंट्री को नुकसान हो. सो यस, वो प्रोटेस्ट जो थी वो भी वहां पे न्यूज में थी. देन वी गॉट दिस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए's न्यू जजमेंट. They actually strike down the Trump's reciprocal tariff.
हाँ मतलब थोड़ा सा लेट ये न्यूज आई है टेक्निकली बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ डे एंड नाइट बट whatever we got from the news कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ चाचा ट्रम्प जो थे उन्होंने लगाया था दैट वाज स्ट्रक डाउन यूएस सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली रिजेक्टेड द ट्रम्प्स टैरिफ प्लान कि वो जिस तरीके से लगाना था दैट वाज लाइक 6-3 मेजोरिटी से उनका मानना है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द प्रेसिडेंट डोंट हैव राइट टू पुट द टैरिफ्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर साइड तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज थी जो अपने पास थी फिर बंगाल एसआईआर राइट जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनली अब जाके इंटरवेंशन कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो ज्वाइन करेंगे बंगाल के एसआईआर में एंड दे आर गोइंग टू टॉक दे आर गोइंग टू सी द allegations of logical discrepancy जो ये पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच के जो टसल है उसको लुकआउट करने के लिए so that is the second biggest news that we got then politics is rising again and again on the west bengal uh, CAA amendment like Citizenship Amendment Act uh, को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको वो करने के लिए जल्दी से जल्दी क्लियर करने के लिए एम्पावरिंग एक एम्पावरिंग कमेटी जो है वो बनाई गई है स्पेशली फॉर वेस्ट बंगाल तो यस लाइक इलेक्शन आ रहे हैं इलेक्शन आने के टाइम पे पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है रिमेम्बर सीएए इट वाज लाइक 5 इयर्स बैक 2019 में कहीं लॉन्च हुआ था मतलब वो हुआ था पास हुआ था इट वाजंट नोटिफाइड फ्रॉम देयर टू नाउ until March 2024 when we saw election like 2 months later. So Ministry of Home Affairs waited for the election, then they actually put the notification on that particular topic. Okay, and then India officially joined the Pax Silica, right? Yes, so Tech Critical Mineral Alliance, that is what they are calling it. Technological and Critical Mineral Alliance, Pax Silica, initiated by US. India will join at आगे वो करेंगे इस पे अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या है पैक्स सिलिका हालांकि वी हैव ऑलरेडी लाइक डिस्कस्ड इट another institution or another particular coalition that India joined was Board of Peace for Gaza as an observer इंडिया ने बोला कि भैया हम एज एन ऑब्जर्वर बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा जो है वो ज्वाइन करेंगे एंड उसके अलावा जो न्यूज़ है उसमें एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जो कि फेज 2 के फॉर्म में असम में लॉन्च होगा मतलब लॉन्च हो चुका है हमेशा वहीं थे फिर वी हैड लाइक महाराष्ट्र का फर्स्ट नेट जीरो जो पहला ग्राम है दैट इज अ न्यूज़ जो आपको एक्चुअली फॉलो करनी चाहिए दैट इज दिस इज अ नेट जीरो पंचायत एक्चुअली यस ये पहली पंचायत है महाराष्ट्र की विच इज हैविंग नेट जीरो एमिशन तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ थी बिकॉज इंडियाज लाइक विजन टू नेट जीरो इट हैज लाइक वास्ट चैलेंजेस अगर मैं बात करूं रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी इसमें ये था कि इंडिया को अगर 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक जाना है तो इंडिया हैज टू स्पेंड लाइक अप्रोक्सीमेट 120 बिलियन डॉलर्स टू 500 बिलियन डॉलर्स just to get the technical support just to get the financial support to those companies and people who are like associated with technologies and changes face changes तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फिर जो ओवरऑल पॉलिटिक्स चली रही है स्टेट वाइज अभी मध्य प्रदेश में जो वो है कैलाश विजयवर्गीय उनके कोई स्टेटमेंट था जिसके कारण काफी ज्यादा बवाल हो गया था उन्होंने शायद असेंबली में औकात औकात की बात कर दी थी अपोजिशन वाज फ्यूरियस ऑन दैट राजस्थान का जो प्रॉब्लम है वो चल ही रहा है सो अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर टॉपिक्स जो हमारे क्लैट के लिए लॉ एंट्रेंस के लिए जरूरी है others जो पर्टिकुलर न्यूज है दैट इज एसोसिएटेड विद द what we can say politics on तो हम उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे बट हाँ न्यूज में न्यूज़पेपर में आज थोड़ा सा अच्छी न्यूज भी है और बुरी न्यूज भी है बट अच्छी न्यूज ज्यादा है आज सो दैट वाज द ओवरऑल व्हाट वी कैन से अ डेज क्या कहना चाहिए कि कंक्लूजन की एक दिन में जो न्यूज थी दैट इज सोशल मीडिया न्यूज़पेपर और समथिंग लाइक दिस वो क्या क्या थी अब आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज में सबसे पहले ये वाली न्यूज पे अपन डिस्कशन करते हैं कि भैया यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प का जो टैरिफ है उसको रिजेक्ट कर दिया है
यस। सो थोड़ी सी टाइमलाइन की बात कर लें जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सो अप्रैल 2025 ट्रम्प ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ना डिफरेंट कंट्रीज जो है उनके ट्रेड पे लगा दिया जस्ट टू मैनेज द डेफिशिएंट। सो लेट्स से इंडिया वाज पुटिंग 15% टैरिफ ऑन अमेरिका and America was putting just 3% because America is a developed economy, India is a developing economy. तो उन्होंने बोला कि नहीं आज इसका तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, सो वी आर गोइंग टू पुट इक्वल टैरिफ ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो दे पुट 18% बैक ऑन अस। फिर उसके बाद पेनल्टी टैरिफ और ये वो सारी चीजें, वो तो इंडिया के साथ अलग कहानी है, वो बात अपन वो करेंगे। सो इन अप्रैल 2025 दे पुट अ रेसिप्रोकल काइंड ऑफ टैरिफ on every country on the emergency basis to tackle the trade deficit। 2025-26 में लॉ सूट्स जो थे, लॉ सूट्स मतलब जो लीगल तरीका था इनको काउंटर करने का, वो फाइल हुए बाय द डिफरेंट स्टेट्स एंड बिजनेसेस challenging the tariff legality. So let's say I'm running a business and because of that tariff, I'm getting the goods from outside country for the like expensive, है ना, ज्यादा पैसे भी मिल ले रहा हूँ। तो इसके बाद मेरी कंपनी को मुझसे पर्सनल लॉस हो रहा है। सो टू टैकल दोस लॉसेस वी पुट अ लॉसूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट कि दिस पर्टिकुलर टैरिफ इज हार्मिंग माय बिजनेस। December 2025 they put a report, है ना, saying that treasury reports 133 billion dollars from the import taxes that President Trump has what we can say imposed, है ना। जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके कारण 133 बिलियन डॉलर्स जो है वो कलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम द टैक्सेस। ये रिपोर्ट आई। जस्ट अ मिनट। ओके। एंड फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की उसमें मेजोरिटी में रूल किया कि भैया आपके पास ये पावर नहीं है। द पावर बिलोंग्स टू कांग्रेस। द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू इम्पोज टैरिफ बिलोंग टू कांग्रेस, नॉट टू चचा ट्रम्प। ठीक है। सो थोड़ा सा अब अपन इसको डिटेल में टाइमलाइन के बाद बात करते हैं कि डिटेल में क्या हुआ। सो ऑन February 20th 2026 US Supreme Court ruled with the 6-3 majority that President Donald Trump overstepped his legal authority by imposing bold reciprocal global tariff without explicit approval from the Congress. So it's a harsh comment to judiciary कि he overstepped, right? Yes. And इन्होंने जो बोर्ड जो रेसिप्रोकल ग्लोबल टैरिफ लगाया दैट इज समथिंग which is not under his authority, right? It belongs to Congress. Without Congress's approval, you cannot say this. So they mentioned certain point in their ruling. First of all, they talk about the lack of authorities. Yes, the court held that the International Emergency Economic Powers Act, that is IEEPA of 1977, does not grant the president the power to unilaterally impose a tariff. सो उनका ये कहना है कि जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है वो प्रेसिडेंट को पावर नहीं देती कि आप खुद से ही यूनिलेटरली बैठ के डिसाइड कर लो कि अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को। आई मीन यू आर बिहेविंग लाइक रोहित मेहरा फ्रॉम कोई मिल गया कि आज इंडिया के साथ बात करनी है तो ओ अच्छा 18% टैरिफ लगाएंगे। सो यू कैन नॉट डू दिस। दिस एक्ट डज नॉट ग्रांट president the power to unilaterally impose tariffs। जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बहुत प्रॉपरली लिखा है कि आईईईपीए अलाउज द प्रेसिडेंट टू रेगुलेट importation during emergency। It does not include the distinct power to tax or to raise revenue through tariffs। सो उनका सिंपल सा मतलब था जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है 1977 जिसका जिसको बेस बना के ट्रम्प ने ये पर्टिकुलर टैरिफ लगाया था। बोला कि ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप रैंडमली अपने मन से किसी को उठा के टैरिफ वो कर दो। और ये बिल्कुल भी टैक्स के थ्रू पैसा उठाने के लिए तो रेज नहीं, मतलब आपको पावर नहीं देता। राइट। सो लैक ऑफ अथॉरिटी उन्होंने पहली चीज डिसाइड की। सेकंड, द जो उन्होंने मेंशन किया वो ये कि जो जुडिशियल अलाइनमेंट है वो भी इसके अगेंस्ट जाता है।
Third, they said the dissent from different ग्रुप्स जो आया है एंड इवन द 6-3 मेजोरिटी में उसमें भी ये बात कही है कि भाई साहब जो भी पर्टिकुलर पावर टू रेगुलेट है should be interpreted more broadly to include the tariff as transition tool for the foreign commerce. So उन्होंने बोला कि ठीक है we can include कि भैया हम एक broader definition देंगे इस टाइप की चीजों की but for now he is not the one जो ऑथराइज होगा फिर उन्होंने सीधे तौर पे ये भी लिखा कि जो क्या कहना चाहिए मेजोरिटी व्हाट वी कैन से डॉक्ट्रिन है जो ये बताती है कि भाई साहब आप प्रेसिडेंट हो तो आप अलाउ कर सकते हो नहीं यू कैन नॉट अलाउ इट दिस इज सपोज टू बी गोइंग थ्रू द कांग्रेस हाँ so like if the congress is passing a bill if a congress is talking about the uh, like tariffs and then the majority accept this particular process कि हाँ ठीक है we can put the reciprocal tariff then and only then right you can actually go for it and you cannot unilaterally put the uh, tariff onto the what we can say countries without any discussion with the Congress. तो वो पर्टिकुलर जो भी चीजें हैं जैसा भी है उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दिया है वो अलग है बट उनका ये मानना है कि भाई साहब आप अपने तरीके से देशभक्ति दिखा रहे हो बट देशभक्ति दिखाने के लिए भी आपको कांग्रेस से क्या करना पड़ेगा परमिशन लेनी पड़ेगी ये तो हो गया कि कोर्ट ने क्या कहा है ना हम बात करेंगे कि इसके इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होंगे वी डोंट हैव लाइक वेरी प्रॉपर आइडिया कि अभी ये क्या क्या चीजें हैं है ना बट जब हम इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है उसके हिसाब से दीज टैरिफ्स आर इनवैलिड फीलिंग गुड हाँ मतलब इस आदमी ने टैरिफ टैरिफ खेल के ना बहुत परेशान कर रखा है दुनिया को इंडिया में बवाल किया हुआ है मतलब ये टैरिफ ही है जिसके कारण कल कांग्रेस वाले जो यूथ कांग्रेस वाले हैं वो बेचारे जाके मतलब टी शर्ट उतार के आधे नंगे होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे या इम्पैक्ट समिट में राइट हाँ तो दैट इज समथिंग जो कि खैर ठीक है थोड़ा सा रिलीविंग है अगर मैं एक एक्सपर्ट्स की कमेंट की बात करूं which I note down is कि the ruling strike down the liberation day tariff and other IEEPA based leave on majority partners like China, Canada, Mexico. So yes, immediately कहीं ना कहीं चाइना कनाडा मेक्सिको को एक वो मिल रहा है रिमेनिंग जो है उसमें सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ ऑन स्टील एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल कॉपर which are imposed under the section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 for the national security remain in force. हेलो अर्नब सुन के ये कहना है कि जो सेक्शन 232 के अंडर टैरिफ्स लगाए गए हैं वो सेम रहेंगे देन ट्रम्प की तरफ से न्यू ग्लोबल टैरिफ जो है राइट उसकी डिक्लेरेशन हुआ है सो उसके लिए भी वो किया गया कि आज आफ्टर द रूलिंग द प्रेसिडेंट टर्म साइन एन एक्ट ऑफ 1970 एन एक्ट सॉरी एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इम्पोज द न्यू 10% global tariff using the section 122 of the trade act 1974 this authority allows for a temporary surcharge up to 150 days right to address the balance of payment and deficient so इन्होंने एक नया टैरिफ डील जो है जो ग्लोबल टैरिफ है वो अनाउंस किया है अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 जो इनको 10% टैरिफ लगाने के लिए फॉर द 150 डेज क्या करता है अलाउ करता है फॉर द पेमेंट डेफिशिएंट एंड समथिंग लाइक दिस now talking about one more controversy that was in particular news was a refund controversy. The decision was silent on whether the government must refund the estimated 130 to 175 billion dollars already collected. President Trump suggested that this could lead years of litigation. So अभी refund पे silence बना हुआ है refund करेंगे या नहीं करेंगे राइट बट चीजें हैं now एक हाँ जो दक्ष के एक डाउट आया वो दैट इज समथिंग जिसको हम डिस्कस करने वाले ही थे कि सो व्हाट अबाउट द डील नाउ डज द डील स्टिल वैलिडेट द आंसर इज कि डील अभी तक हुई कहाँ है ट्रम्प सॉरी दक्ष मैंने एक्चुअली बात की थी मेरे गुरुदेव से अभी सुबह सुबह उनको फोन लगा के परेशान किया मैंने
ये जो ऐसा जजमेंट आया तो शायद इंडिया यूएस डील का क्या होने वाला है, तो ही मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि डील हुई का, इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क। अभी हमने क्या किया हुआ है, हमने फ्रेमवर्क स्टार्ट किया हुआ है, काम करना शुरू किया उस डील पे। सो इट माइट टेक सम टाइम एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है एंड अमेरिका में जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत पावरफुल है, सो डेफिनेटली वी कैन गेट लोअर टैरिफ। चाचा ट्रम्प को एक बढ़िया ऑन योर फेस मूवमेंट जो है वो मिलने वाला है, राइट? तो यस, अभी हमारी डील फाइनलाइज नहीं हुई। हाँ, ट्रम्प मे हैव लाइक मे प्रेशराइज आवर गवर्नमेंट कि नहीं भाई, इस पे बात हुई थी तो इसी पे रहते हैं, बट इंडिया कैन एक्चुअली बी इन अ लाइक प्लेस जहां पे वो थोड़ा सा और ज्यादा क्या कर सकती है, निगोशिएट कर सकती है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, जब डील हुई उसके बाद देयर आर पर्टिकुलर थिंग्स जो बाहर आया, जिसमें मार्केट रिएक्शन, ग्लोबल रिएक्शन जो है ना वो आया। फॉर एग्जांपल मार्केट्स की अगर बात करें तो यूएक्स स्टॉक इंडाइसेस इंक्लूडिंग S&P 500, Nasdaq, they started rising, right, like seeing the potential relief from the inflation। तो जो मार्केट है उन्होंने तो वेलकम किया। सो ये जो क्या नाम है उनका, जो इनकी अटॉर्नी थी, क्या नाम था, जिन्होंने यूएस कोर्ट में इनको डिफेंड किया था अगेंस्ट दैट एप्स्टीन फाइल, जो ये कह रही थी कि भाई मार्केट को देखो, मार्केट्स आर राइजिंग, ये वो। तो मार्केट्स आर टेक्निकली नॉट राइजिंग बेस्ड ऑन टैरिफ, द मार्केट्स आर वेलकमिंग दीज टैरिफ कट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज दे नो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन से क्या मिलेगा, राहत मिलेगी। इन्फ्लेशन से राहत मिलेगी तो पीपल विल इन्वेस्ट मोर इनटू द मार्केट। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन था। जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड पार्टनर्स थे लाइक ब्राजील, कनाडा, मेक्सिको, इंडिया, दे वेलकम द रूलिंग बट रिमेन्ड कॉशियस। Nothing that president shift to alternative legal scaffolding means the trade uncertainty persist। So सभी लोग रूलिंग को तो वेलकम कर रहे हैं, है ना, बट दे आर स्टिल वेरी 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 कॉशियस कि हम कुछ ऐसा ना बोलें कि ये आदमी पागल हो जाए। ठीक है। सो दैट इज यूएस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द रीसेंट चाचा ट्रम्प टैरिफ। भाई 1 साल से परेशान कर रखा है इसने, अप्रैल लास्ट ईयर से चालू किया था ये काम। मतलब चाइना वालों ने तो खैर लपड़िया ही दिया था लगभग लगभग, बट ठीक है, दैट इज व्हाट समथिंग हैपेंड। हाँ, इट्स अ गुड न्यूज दैट वी गॉट आर व्हाट वी कैन से, the ruling was in our favor, the public's favor, क्योंकि वो यही रहा था मेजरली, अमेरिकन पॉपुलेशन वाज काइंड ऑफ अ बिट परेशान कह सकते हो तुम, because a phone that was costing them 100 rupees before this tariff, if we put the tariff of 25%, and the phone's overall cost increased by 25% because the companies took money from the customers, they are not paying from their pocket, right? तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ा ही रहा था। सो दिस इज अ वेलकमिंग डिसीजन, है ना, राइट? ये चाचा ट्रम्प को वेलकम नहीं बोल सकते अपन, राइट? वो ही वाज लाइक कि उनके जो कल के स्टेटमेंट थे आफ्टर द रूलिंग, इट वाज सिंपली कि दिस इज लाइक एब्सोल्युटली अशेम्ड, है ना, एंड डीपली डिसअपॉइंटेड, समथिंग लाइक दिस। तो वो सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा भाई को भी सेटबैक तो हुआ है। खैर ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, हम तो वेलकम करेंगे भाई। ठीक है, now let's move to two major news. First one is Supreme Court of India steps in the judicial officers will now join the Bengal SIR। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सीधा कहना है कि जो इंडियन इलेक्शन कमीशन है, ममता बनर्जी है, जो SIR वेस्ट बंगाल, वी आर हैविंग सर्टेन टसल बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो SC सेट की now judicial officer will join the SIR process। सबसे पहले एक बार इशू वापस रिकॉल कर देता हूँ। देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल लॉ। एलिगेशन ऑफ अ वोटर डिलीशन ड्यू टू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, कि इनका ये मानना है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी डाल के क्या कर रहे हैं, हमारे वोटर्स डिलीट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड कि दैट दे आर गोइंग टू डिप्लॉय serving and retired judicial officers, right?
to observe, to process the SIR. They said officers, those officers who are like a judicial officer, and whether they are serving or retired, they must be the rank of district or additional judge. They should join the what we can say SIR process. And the Supreme Court also claimed the situation extraordinary. They said we are not violating the Article 324 powers of Election Commission of India. This is something which we are doing under the judicial oversight over the quasi judicial function. सो हमने जुडिशियल ओवरसाइट करके क्या किया है इसको देखने का डिसीजन किया बिकॉज दिस इज गेटिंग क्रिटिकल ये आर्टिकल 324 के थ्रू दिया गया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर है उसको वायलेट नहीं करता ठीक है so that was the first particular good news from Indian Supreme Court. Thoda, I think if the judicial officers will work independently and honestly, they can actually give us the exact idea, exact what we can say thing जो हो रहा है SIR में. If the opposition is saying they are deleting the voter based on their benefit, that will also come. If the Election Commission of India is correct कि नहीं, we are doing it on the basis of regular basis, जो भी चीजें होती हैं constitutional basis, so that will also come. So there are chances कि this is going to be having a positive impact. So next one is India's joined the Pax Silica. Yes. So technically अगर मैं बात करूँ yesterday की तो formally India joins the Pax Silica, an initiative, an strategic initiative है ना to align the global supply chain of rare and strategic mineral including semiconductor and other things. So overall fashion में अगर मैं बात करूँ तो क्या चीजें हैं पैक्सिलिका इनिशिएटिव is a strategic declaration with the United States to source global supply chain for semiconductor, artificial intelligence, and critical mineral. Right? तो पैक्सिलिका is associated with semiconductors. क्या हमने semiconductor mission भी start किया था? Artificial intelligence, the critical mineral. These are the three basic major pillars जिसकी बेसिस पे ये पैक्ट जो है यूएसए ने बनाया है ना एंड इंडिया ने फॉर्मली इसको कल ज्वाइन कर लिया है अब अगर पैक्स लीगल डिक्लेरेशन की बात करें तो इंडियाज आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन यूएस एम्बेसडर दैट इज Sergio Gore and US Under Secretary of State Jacob Helberg, they were present with the अश्विनी वैष्णव जिन्होंने ये सिग्नेचर किए कि हाँ भाई हम ऑफिशियली पैक्स लीगा को ज्वाइन कर रहे हैं दिस इज like India is I guess 10th full time member of this particular alliance. Uh, अगर मैं ओवरऑल बात करूं एक एक्सपर्ट की कमेंट की तो दिस इज द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम इंडिया. India is the 10th full-time member of alliance. Its inclusion followed a period of what we can say belatedness, having been excluded at the initiatives in December 2025 launch, and signals a reset in India-US relation following the trade and tariff agreement. तो जब दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इंडिया वाज समहाउ sidelined by the USA, बट नाउ द डील कंप्लीट होने वाली है फ्रेमवर्क क्लियर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक वेलकमिंग वो है कि हाँ इंडिया की तरफ से और यूएस की तरफ से जो एक प्रॉब्लम थी जो एक टसल था वो भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है. The alliance is aimed to build like a trusted alternative to China-centric manufacturing and source for the full silicon stack from mineral extraction to AI deployment. तो उनका सीधा मानना है कि हम जो चाइना स्टैब्लिश है चाइना रूल्ड चाइना डोमिनेटेड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है हम उसकी जगह पे रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से लेके और एआई डिप्लॉयमेंट तक हम पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है उसको अपने फेवर में क्या करना चाहते हैं सेट करना चाहते हैं सो दैट द डिपेंडेंसी ऑन द चाइना जो है वो कम हो जाए. सो देर आर सम पिलर्स ऑफ पार्टनरशिप अगर हम बात करें जो मैंने उसमें पैक में देखा. सो वन इज सप्लाई चेन सिक्योरिटी, सेकेंड वन इज एआई अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप, थर्ड वन इज सर्विसेज, द फोर्थ वन इज इंडस्ट्री. सो चार पिलर्स के बेसिस पे ये इस ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज करना चाहते हैं. द फर्स्ट वन इज सप्लाई चेन सिक्योरिटी.
So this is going to focus on the securing semiconductors and a critical mineral like lithium and rare earth. The AI Opportunity Partnership, a joint statement to promote pro-innovation and regulation and strengthen the physical AI stack, including the data centers and high-performance computing. The services, the signatory gains access to US-led services to help acquiring the advanced US-made AI semiconductors more efficiently. The last one is industry support. High-level participation from the leaders like different group. They are going to help you building the industry and improving it. अगर करंट मेंबर्स की बात करें तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इसराइल, जापान, कतार, कोरिया, साउथ कोरिया है ना, सिंगापुर, यूके एंड नाउ इंडिया। अगर मैं और नॉन सिग्नेचरीज की बात करूं तो कनाडा, यूरोपियन यूनियन, नेदरलैंड, these are some countries which are non-signatory members, but India becomes a proper signatory member. पैक्स लेकर ज्वाइन करने का फायदा है हमें? The answer is yes, definitely फायदा है। क्या फायदा है? The silicon-based supply chain and their technical innovation, they might be helpful for India. You are well aware कि हमारे बजट में हमने रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर जो है ना, उसको क्या किया हुआ है, पैसा वो किया हुआ है कि सो दैट वी कैन फाइंड द रेयर अर्थ विद इन आवर कंट्री। तो अगर हमारे पास टेक्निकल एडवांसमेंट और बाकी चीजें होती तो वी कैन फिगर इट आउट और हम अपना बेहतर वो कर सकते हैं, व्हाट वी कैन से रेयर अर्थ मिनरल सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर एक आउटपुट देख सकते हैं। नाउ सेंटर notifies committee to clear pending CAA application in Bengal. Anybody what is CAA? किसी को अगर आइडिया हो क्या बवाल है ये, तो चैट बॉक्स में आई एम रीडिंग। नो? नो वन? चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना, व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सी ए ए, Citizenship Amendment Act, it was like proposed in 2019, passed in 2019, this act, right? So it grant citizenship. So ये क्या देता है? Citizenship देता है। किसको देता है? That is Hindus, Sikh, Buddhist, Jain, Christians, Parsis. So there are six minority communities. ध्यान से सुनना what I'm writing here. Six minority communities, right, in three majority Muslim countries. And what are those countries? That is Pakistan, हमारा प्यारा पड़ोसी देश, हमारा प्यारा बेटा, Afghanistan and Bangladesh. Yes. So 2019 में Citizenship Amendment Act आया, not directly refugee, it's a specific Daksh. So जो ये कहता है कि there are six communities, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jain, Christian and Parsis, are religiously persecuted in three Muslim majority countries, which includes Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. So anybody who entered from these community, है ना, थोड़ा सा कलर भी चेंज किया जाए, before December 31st, 2014, है ना. So if somebody entered India before this particular date, right, this is for which class? That is CLAT. Okay, another जो भी entrance test होते हैं जिसमें the Hindu का importance है बेटा. So the thing is कि the people from these communities, from these three countries,
right, who entered Indian border before 31st of December 2014, they are supposed to get citizenship from like in India. So what exactly was the proposal? कि पहले ऐसा होता था कि 12 years जो है ना, that is supposed to be spent within the Indian Union before getting a citizenship, right? तो वो जो है उसको कम करके 5 years कर दिया गया. There was criticism, that's for sure. The criticism was this, that first thing, it's discriminatory. Right to freedom of religion and equality जो है वो इंडिया में है. So you cannot call just for like 5 6 religions. Second thing, religious persecution is something जिसे आप define करना पड़ेगा. Third thing was security concern. Yes, you have reduced the residence years from 12 years to 5 years. So is it going to compromise our security? One more particular concern for security, how you are going to verify the background check of any individual, whether they are not associated with ISI or something like this. So कई सारी चीजें थी इसके अगेंस्ट. एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था Shaheen Bagh, this was one of the India's most unique protest led by the people, originated by the people. There were no major particular leader जिसको तुम कह सकते हो कि protest का एक leader था, right? So that was Citizenship Amendment Act. The recent order from the central government is to they have notified an empowered committee, right, in West Bengal to fast track the CA application, to fast track the CAA applications in West Bengal. सो सेंटर का सिंपल एक पर्टिकुलर मोटिव है, सिंपल एक कहना है कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है. There are people who are living in West Bengal who are not citizenship, but they have applied for citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019. So we are setting up a committee, an empowered committee, which is going to fast track the application. Those comes under the CAA. राइट. सो उनका ये मानना है कि जल्दी जल्दी SIR को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और इलेक्टोरल रोल को और ज्यादा प्रोफिशिएंट एंड परफेक्ट बनाने के लिए व्हाट वी शुड डू, वी शुड ऐड दोज एप्लीकेशंस और हम उसको जल्दी जल्दी क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. तो इससे हमारा जो इलेक्टोरल रोल है दैट इज गोइंग टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड मोर डिजायर्ड. ओके. अब पॉलिटिक्स क्या कहती है ना. द पॉलिटिक्स इज सेइंग कि जो पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल की करंट गवर्नमेंट है, दे आर टेलिंग दैट द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दे आर इंक्रीजिंग देयर वोटर ऑन द नेम ऑफ CAA. मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स है ना. एंड सेकेंड थिंग, द बीजेपी सेइंग कि वी आर मेकिंग इलेक्टोरल रोल मोर प्रिसाइज, मोर परफेक्ट. ओके. सो इन दोनों चीजों में बहस चल रही है, बट यस, दे हैव एम्पावर्ड अ कमिटी टू फास्ट ट्रैक द एप्लीकेशन. And I still don't understand, like that was in 2019. 2019 से 2026 तक का वेट क्यों किया गया? That may look political. अब इसका आंसर तो हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह ही दे सकते हैं. I'm appearing for UPSC exam, so will this help for current affairs? Definitely. Anything that is associated with the newspaper reading is like helpful for any UPSC exam. It's any particular government exam which has current affairs. तो ये जो बवाल है ये है. एंड अगेन, वन मोर डिबेट दैट इज बीइंग राइज्ड बाय द एक्सपर्ट इज कि क्या सिटीजनशिप जो है उसे वोटर एलिजिबिलिटी जो है उससे लिंक किया जा सकता है. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. जैसा कि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ SIR, the debate in the Supreme Court was the Election Commission of India don't have the power to verify the citizenship. It only has the power to verify the voters' eligibility. Right? So if they are adding citizenship to individual communities, for example, जो मथुआ community है ना, जो मथुआ community है, which is a major SC group in Bengal, जो बाहर से आई है बांग्लादेश से, they are filling the application.
राइट? सो मतवा कम्युनिटी के लोग भरेंगे, एंड आर दे गोइंग टू हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल्ड फॉर द वोटर्स? तो ऐसी कई डिबेट्स जो है अभी स्पार्क होने वाली है। लोग मतलब ये एसआईआर कहीं नहीं जाने वाला। Is it useful? Obviously, we are discussing it for the CLAT and other law entrance test purpose. Yeah, right? और करंट अफेयर्स तो बेटा हर जगह आता है। सो दैट इज व्हाट सीए नोटिफिकेशन। फिर जो बोर्ड ऑफ पीस था, है ना, दिस वाज क्रिएटेड बाय चाचा ट्रम्प। Why he created that is something still to be debatable. When he said कि भाई साहब United Nation is not working properly, so I and United Nation didn't even recognize my effort to the peace and other particular thing I did. So I'll make my kind of a board like United Nations. So he decided to build a board of peace. राइट, सो फर्स्ट तो पर्टिकुलर वो था, वो ये था कि भाई साहब गाजा में जो हमने तोड़फोड़ मचाई है इसराइल ने, हमास ने, उसको हम रिपेयर करेंगे। और उसके लिए जो गाजा की मीटिंग है वो हुई, एंड इंडिया ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ पीस एज ऑब्जर्वर, नॉट अ फुल टाइम मेंबर। इंडिया इज ऑलरेडी द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी अलायंसेस जो इस तरीके की बात करेंगे, जो जो किसी कंट्री से लेड होंगे, उस पर तो ज्वाइन नहीं करने वाला। सो दैट इज द रीजन कि वहां पे फुल टाइम मेंबर इंडिया नहीं ले रहा है। फिर अमित शाह अभी असम में हैं। सो उनका कहना है कि असम विल बी फ्री ऑफ फ्लड्स एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, पिछले 10 साल से इनकी गवर्नमेंट, सेंटर में भी, असम में भी, okay, and still the Amit Shah is still talking about the infiltrators and flood. So that's also I'm not sure what they were doing at Assam. Okay, let's move for the next particular news. Kerala has over 2.69 crore voters in the final list after the special revision. So Kerala का SIR जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, एंड लाइक टोटल 2.69 करोड़ वोटर जो है वो हैं। एंड जो 2025 अक्टूबर में थे वो 8.97 लाख थे, से कम हुए हैं। सो ओवरऑल फैशन में जो है वो इतने वोटर्स आपको केरला में देखे हुए हैं। केरला आल्सो हैज इलेक्शंस, एंड वी हैड दिस डिस्कशन, यूथ कांग्रेस workers hold a protest at TI summit over US trade deal, 4 arrested. I always want that the government and everybody should have a protected right to dissent, right to protest. But this kind of protest, not welcome. मैंने बोला ना, अगर आप बाहर कर लेते वेन्यू के तो दैट इज गोइंग टू मेक मोर सेंस। बट आप विद इन द वेन्यू जाके टी शर्ट उतार के आधे नंगे होके जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट वेलकम। बट they clarified that the protest was not against the India AI Impact Summit. It was against the United States India trade deal, which is going to harm the farmer. तो प्रोटेस्ट हुआ, 4 लोग अरेस्ट हुए, 10-12 डिटेन भी हुए हैं। राइट, बच्चे SIR इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। राइट, दिस इज अ प्रोसेस जिससे वोटर लिस्ट अपडेट होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आज से 20 साल पहले एक वोटर लिस्ट बनी थी। So within 20 years, there are people who will become 18 plus, so they need their name in voter list. There are people who died. There are people who migrated from one place to another place. So एक वोटर लिस्ट अपडेशन जो है जरूरी होती है, उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। AI Summit draw $250 billion investment commitment. I'm clarifying, $250 billion investment commitment, राइट? एंड दे आर नॉट सलमान खान कि ये बोले कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, नहीं। दीज आर जस्ट MOUs एंड कमिटमेंट दैट दे हैव मेड। लाइक फॉर एग्जांपल अडानी जी सेड कि आई विल स्पेंड $100 billion in AI data center and AI improvement, but they will spend, है ना? So what are going to be the consequences, how they are going to spend, that is still to be डिस्कस्ड। अभी टर्म्स कंडीशन बाकी सारी चीजें जो है वो बनी है, बनेंगी, डिस्कस होगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। सो बट इट वाज अ गुड आउटकम। अगर मैं एआई इम्पैक्ट समिट की बात करूं, आई टोल्ड यू वन ऑफ माय फ्रेंड विजिटेड दैट पर्टिकुलर प्लेस। इंडिया हैज लाइक वेरी यूनिक पोटेंशियल इन द एआई। देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट एग्जीबिटर्स जिन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई अपने बूथ में। एंड अगर इंडिया को एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर
जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है अगर उनको प्रॉपरली कर दिया जाए एआई सेंट्रिक करके तो दे कैन हैव टन्स ऑफ गुड थिंग वी आर लाइक जुगाड़ तो हमारा तुम्हें पता है सबसे अच्छे होता है मतलब द फर्स्ट सक्सेसफुल मास मिशन अमेरिका डिड विद द वर्थ ऑफ 50,000 करोड़ हमने 550 करोड़ में ही पहुंचा दिया था मार्स सो हमें पता है कि हम कितने एफिशिएंट हैं ओके नाउ अगर मैं आईएमएफ चीफ की बात करूं है ना तो उनका कहना है कि एआई कैन हेल्प इंडिया टू अचीव विकसित भारत गोल बट पोजेस हाई रिस्क टू जॉब यहाँ पे एक और डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए कि एआई वेलकम है बट एआई के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होने चाहिए सो लेट्स से पॉजिटिव इम्पैक्ट में वी कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज बेटर टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा काम आसान हो जाएगा बट जो नेगेटिव एस्पेक्ट है फॉर एग्जाम्पल जॉब लॉसेस there was no discussion in that particular summit about the job loss. How many jobs are going to cut down? First thing, second thing, how many has already cut down from the past, right? And how they are going to create a new opportunity. Sam Altman was the only one who actually talked a bit about it. That yes, there are going to be job losses, but the AI will also create the new job opportunity. But those job opportunities are going to be highly skilled one तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन जो है वो अभी भी पेंडिंग है लेट्स होप फॉर द बेस्ट आज भी बचा हुआ है दिन तो दे गेट सम डिस्कशन ऑन दिस ठीक है नेक्स्ट एनएसयूआई जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है उसका नया प्रेसिडेंट जो है वो विनोद झा का जो है उनको अपॉइंट किया गया है जो बंगाली ऑथर थे क्या कहना चाहिए मणिशंकर मुखोपाध्याय उनकी डेथ हो गई है ही इज बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट है ना जो वो थे क्या कहते हैं जननन्या जनाचर्या जनारण्य और बाकी सारी चीजें ही रोट अ वेरी गुड बुक्स ही वाज आल्सो साहित्य अकेडमी अवार्डी सो मेक श्योर कि इनको ध्यान रखेंगे Hats off to US Supreme Court for striking down the Trump's tariff strategy, says Congress. कांग्रेस के जो लीडर हैं जयराम नरेश उन्होंने यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है टू कट डाउन द ट्रम्प्स टैरिफ स्ट्रेटजी दे वेलकम्ड इट राइट एंड सेस कि भैया दिस इज गोइंग टू हेल्प इंडिया टू गेट अ बेटर डील जैसा कि अपन ने बात की है राइट वो $500 बिलियन पे भी कमेंट किया कि $500 बिलियन इम्पोर्ट जो है वो भी अनरियलिस्टिक है जस्टिफाइड नहीं है हाँ ये थोड़ा सा ये वाला एक एडिटोरियल और ये वाला एक एडिटोरियल ये दोनों पढ़ लेना भाषा मैटर्स इन इंडियाज मल्टीलिंगुअल मूवमेंट कि इंडिया में किस किस तरीके की जो चीजें हैं भाषा से लेकर राइट लैंग्वेज से रिलेटेड उसके बारे में एंड मणिपुर जो है उसके लिए कि भैया सेफ्टी फर्स्ट मणिपुर को हम सेफ कैसे करें इवन वी गॉट अ न्यू गवर्नमेंट न्यू चीफ मिनिस्टर टू न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स but still the violence is erupting. So how we can get a safeguard for them? ठीक है सो बाकी एडिटोरियल्स में तो आपको आज सोशल वो रिफॉर्म्स और सोशल उसमें ही मिलेंगे बिजनेस वाले केस में एक नेगेटिव न्यूज ये है कि नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज नेगेटिव टू फोर्थ स्ट्रेट मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन इंडिया राइट 5 मंथ हाई है बट स्टिल कहीं ना कहीं आउटफ्लो है एक नेगेटिव है राइट तो हमारे लिए एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा कमजोर हो रहा है दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा वो है या डेफिनेटली यार सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन इन एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दक्ष द सुप्रीम कोर्ट वर्क्स एज अ प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स सो लेट्स से a particular government did a deal which is against the interest of the people and somebody put an application in front of Supreme Court कि सर ये डील से मेरे को मेरी कम्युनिटी को या बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है सुप्रीम कोर्ट विल हियर इट and Supreme Court will definitely if it find out the deal is unconstitutional they can definitely intervene there is a separation of power but Supreme Court has power कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है मैं उसे बंद कर ठीक है इंडिया ब्राजील अभी रिसेंटली जो ब्राजील के वो थे क्या कहना चाहिए Prime Minister Lula de Silva, he was, sorry, President Lula de Silva,
He was in India and he wanted to have a very proper trade deal, very proper partnership in terms of different multi-sectorial economic cooperation and other things. तो उन्होंने एक बहुत प्रॉपरली अपनी बात रखी कि इंडिया के साथ एक वाइब्रेंट डायनेमिक पार्टनरशिप हम सोच रहे हैं. इंडियन अमेरिकन disapproved Trump's performance in the first year. राइट. जी हाँ भाई साहब. चाचा ट्रम्प का जो परफॉर्मेंस है एक साल में, बस एक साल से ज्यादा आई गेस दिल्ली की नई सरकार को भी एक साल हो गए ना. आई थिंक हो गए हैं. सो अमेरिकन गवर्नमेंट आर लाइक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि भाई साहब जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो चाचा ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वैसे ही कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट को भी डिसअप्रूव किया जा रहा है. सो इंडियन एंड अमेरिकन मोस्टली डिसअप्रूव द ट्रम्प परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट ईयर. हम भी डिसअप्रूव करते हैं भाई, हमें भी पसंद नहीं आया ये आदमी, है ना, किसी भी तरीके से इस आदमी को प्रेसिडेंटशिप से हटाओ. स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, राइट, द की ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी इन स्पॉटलाइट अमिड द ईरान क्राइसिस. सो क्या ईरान एंड यूएसए लड़ने वाले हैं? राइट, द आंसर इज 60% यस एंड 40% नो. 60% यस क्यों? क्योंकि एफसीन फाइल्स बाहर आ रही है, तो देर आर चांसेस द ट्रम्प, अभी सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई है, तो देर आर चांसेस द ट्रम्प वांट्स टू डेविएट मैटर फ्रॉम दीस थिंग and there are chances कि they're not going to do it. तो कुछ experts का कहना है कि because of these things he might deviate and he might go like face to face with the Iran. But 40% का कहना है कि शायद नहीं भी हो. तो ये वाला आर्टिकल पढ़ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो डेफिनेट लाइक प्लेस जहां से दुनिया भर का अप्रोक्सीमेट 20% पेट्रोलियम जो है वो जाता है. एंड इफ द वॉर हैपेंस, it actually disrupt the 20% of what we can say flow of global petroleum crude oil. So it's going to create huge mess. So इसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना. स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं था. जल्दी से मैच होने वाले हैं तो भैया मैच वैच देख लें. सो रेडी फॉर द क्विज गाइस? यस और नो? यार क्वेश्चंस भी काफी सारे हैं यार. चलो, लेट्स स्टार्ट. ठीक है. Question number one. The US Supreme Court recently struck down the President Donald Trump's reciprocal tariff imposed under which law? सुप्रीम कोर्ट ने, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है, उसने डोनाल्ड ट्रंप के जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है उसको स्ट्रक डाउन किया with which law? Stating which law? Options are Trade Expansion Act 1962, Trade Act 1974, Emergency Powers Law, International Trade Act 1995. बताओ. बताओ गाइस. The correct answer is Emergency Powers Law. यस. सो इमरजेंसी पावर लॉज जो हैं उनके अंडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी है उसको गलत ठहराया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया. ठीक है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर टू इम्पोज टैरिफ लाइज विद. सो यूएस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया जो पावर है टैरिफ को इम्पोज करने का वो किसके पास है? Options are the President, the Treasury Department, the Congress, the Federal Reserve. बताओ. Anyone? Supreme Court strictly mentioned the President doesn't have the power to impose tariffs. Treasury Department collect money and tell us about the reports. Federal Reserve is about the reserve that they are having. The correct answer should be Congress. So Congress have the power to impose a tariff. That is what Supreme Court said. ठीक है. क्या चैट डिलेज है क्या? दक्ष.
आई डोंट नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया recently joined which US-led initiative aimed at building resilient supply chain for electronics and critical minerals? सो इंडिया ने रिसेंटली कौन सा यूएस लेड इनिशिएटिव ज्वाइन किया है फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स? ऑप्शंस आर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, दैट इज आईईएफ, क्वाड सप्लाई चेन इनिशिएटिव, पैक्स सिलिका, ब्लू डॉट नेटवर्क। बताओ। वेरी गुड दक्ष। द करेक्ट आंसर इज पैक्स सिलिका। अपन ने बात करी है आज पैक्स सिलिका के बारे में, इंडिया के ज्वाइन होने का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वगैरह वगैरह। चले, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The special intensive revision of electoral rolls in West Bengal was overseen by the intervention of which institution? So SIR जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वो किसकी इंटरवेंशन जो है रिसेंटली हुई है उसमें? ऑप्शन सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द कैलकाटा हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। टेल मी, किसने रिसेंटली इंटरवीन किया है? वेरी गुड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला ना कि हम जो है वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, है ना, उनको अपॉइंट करेंगे वेदर दे आर रिटायर्ड और करेंटली वर्किंग एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के होने चाहिए, और उनको हम क्या करेंगे, एसआईआर के लिए क्या करेंगे, इंटरवीन करेंगे, एसआईआर के लिए अपॉइंट करेंगे। सो दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Under the Citizenship Amendment Act CAA 2019, the citizenship is granted to the migrants from which of the following countries? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019, उसके अंडर हम किस देशों से आए हुए माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देंगे? ऑप्शंस आर नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बताओ मित्रों। ये तो इजी है। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, सॉरी अफगानिस्तान। वी टॉक अबाउट इट कि इनकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको हम सिटीजनशिप देंगे। दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है। यस यस यस, वेरी करेक्ट दक्ष। चले नेक्स्ट। द सीए रिड्यूस्ड minimum period of continuous stays in India for certain migrant from 12 years to. So Citizenship Amendment Act ने जो minimum residential period है for certain migrants, उसको reduce कर दिया है 12 साल से कितने साल? The options are 10 years, 8 years, 6 years, 5 years। बताओ। वेरी गुड, 5 years। कितने साल? 5 years के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीबीपी फेज 2 कवर्स इंडियाज बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, वो इंडिया के किन बॉर्डर कंट्रीज के विलेजेस के लिए फेज 2 में कवर करेगा? ऑप्शंस आर चाइना ओनली, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड ईरान। बताओ। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज समथिंग जहाँ पे विलेज सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्शन, वोट कनेक्टिविटी, सम अदर थिंग, इन सबको बेहतर किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
The AI Impact Summit held in New Delhi reportedly attracted the investment commitment worth of approximately. So जो AI Impact Summit न्यू दिल्ली है उसने कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो है वो अट्रैक्ट किया है? ऑप्शंस आर 50 बिलियन, 100 बिलियन, 150 बिलियन, 250 बिलियंस। बताओ। नो, द करेक्ट आंसर इज 250 बिलियन। अपन ने बात भी की थी कि 250 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट वो मेड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। According to IMF Managing Director, that is Christina Georgieva, AI could potentially raise global growth by approximately, right? जो IMF चीफ है, डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज क्रिस्टीना जॉर्जिवा। उनका क्या मानना है कि AI could potentially raise the global growth by approximately what percent? Options are 0.2, 0.5, 0.8, 1.5. बताओ। अरे यार, एक तो चैट डिलेड है। The correct answer is 0.8%. The correct answer is 0.8%. सो उनका मानना है कि 0.8% जो है ग्रोथ रेट जो है अप्रोक्सीमेटली एआई करंट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी ग्लोबल ग्रोथ रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग गाजा, sorry, board of peace for gaza meeting was attended by india in what capacity? So जो बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग है गाजा की, इंडिया ने उसे किस कैपेसिटी या किस पर्टिकुलर उसमें पोजीशन में अटेंड किया? ऑप्शंस आर एज परमानेंट मेंबर, एज मीडिएटर, एज ऑब्जर्वर और एज अ चेयरिंग नेशन। बताओ। द करेक्ट आंसर इज द ऑब्जर्वर। द ऑब्जर्वर, राइट। हमने बात की है कि वी आर नॉट द परमानेंट मेंबर्स, सो वी आर गोइंग टू सी एज ऑब्जर्वर। So the Supreme Court directed judicial officers to assist SIR process in which state? किस स्टेट में एसआईआर प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है? ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम। ये तो इजी है यार, इसका तो एक और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में ही बवाल चल रहा है, तो वेस्ट बंगाल के लिए ही बोला जाएगा। Moving on to the next question, the AI Impact Summit proposed the Delhi Declaration, which relates primarily to. So, जो AI Impact, obviously Delhi Declaration, AI Impact Summit, that is artificial intelligence governance, है ना? यही होगा और क्या? चले next, the Citizenship Amendment Rule 2024 were notified by the Ministry of Home Affairs in. So सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद इम्प्लीमेंट हुए हैं, नोटिफाइड हुए हैं 2024 में, वो कब? जैन 24, फेब 24, मार्च 24, अप्रैल 24। बताओ। द करेक्ट आंसर इज मार्च 24। मैंने बात की थी कि जनरल इलेक्शन के कुछ महीने पहले
मार्च 2024 में वो पर्टिकुलर रूल्स जो है वो नोटिफाइड हुए, राइट, एंड दोज रूल्स वर इम्प्लीमेंटेड, तो दैट वाज मार्च 2024. Moving on to the next one, the Bellagram, highlighted during the Mumbai Climate Week 2026, is known for being India's first, राइट, बेलाग्राम जो मुंबई के क्लाइमेट वीक में अभी रिसेंटली हाईलाइट हुआ है ना, वो किस चीज के लिए जाना जाता है फॉर बीइंग इंडियाज फर्स्ट? ऑप्शंस आर स्मार्ट विलेज, कार्बन ट्रेडिंग विलेज, नेट जीरो पंचायत, या द सोलर ओनली टाउन। बताओ, बेलाग्राम को हम किस चीज के लिए जानते हैं? द करेक्ट आंसर इज नेट जीरो पंचायत। यस, बेलाग्राम मुंबई के जो पर्टिकुलर एक ग्राम पंचायत है वो इंडिया की पहली नेट जीरो पंचायत है। ध्यान देना ये चीज कि जितना कार्बन एमिशन करते हैं उतना कार्बन कंज्यूम भी करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन ट्रम्प्स टैरिफ रिजल्टेड इन द नलिफिकेशन ऑफ टैरिफ दैट हैड कलेक्टेड ओवर। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रम्प के टैरिफ के अगेंस्ट जजमेंट दिया है, राइट, उस पर्टिकुलर टैरिफ के कारण कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है? ऑप्शंस आर 50 बिलियन, 75 बिलियन, 100 बिलियन, 133 बिलियन। दक्ष बताओ। ये तो इजी है यार, कुछ 133 बिलियन डॉलर यूएस ट्रेजरी ने रिपोर्ट किया कि 133 बिलियन डॉलर हमने टैरिफ से क्या किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, राइट, और अपने बात भी की है कि वो रिवर्स होगा नहीं होगा, अभी इट्स अ बिग टाइम। The bilateral army exercise between India and Australia mentioned in the recent report is called as, तो जो बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, उसे क्या बुलाया जाता है? ऑप्शंस आर इंदिरा, ऑसिंडेक्स, ऑस्त्रा हिंद, या सूर्य किरण। बताओ मित्रों। पता है ना ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया कैसे पड़ा? ऑस्ट्रेलिया जो है वो अस्ट्रालय है। महाभारत के बाद यहाँ पे अस्त्र रखे जाते थे। नो, तो दिन में ये लोग लड़ाई करते थे, रात में ऑस्ट्रेलिया जाके अपने अस्त्र रख के आ जाते थे। That's bullshit, huh? करेक्ट आंसर इज ऑस्त्र हिंद। ठीक है, यस, ऑस्ट्रा हिंद इज द बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि रिसेंटली अभी वो हुआ है, न्यूज में आया। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। पांच क्वेश्चंस भी ज्यादा थे यार आज, आई गेस मैंने मतलब 16 क्वेश्चन उठा लिए क्या? So number of questions were also more, news were also important. So this is it from my side for today. Right. I hope you enjoyed the session. I hope you are getting a good amount of knowledge, and newspaper reading तुम्हारी थोड़ी सी better होती जाए, notes making तुम्हारी थोड़ा सा बेहतर होती जाए. That is what we believe. हमें यही करने का मन है. That is why we are doing this analysis. So this is it from my side for today. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करो, लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. See you guys. Good night. Yes, that's I'll fix this chat delay. मैं अभी तरुण से बात करूंगा. तरुण हमारे कंप्यूटर सोशल मीडिया के मैजिशियन है. He will definitely fix it. Right? Okay. See you, buddy.